कोविड सिनेरियो इन अरुणाचल प्रदेश तो बढ़ रहा है, केसेस भी बढ़ रहा है। आज का दिन वी आर गेटिंग सम 200 प्लस केसेस। इसमें वी आर गेटिंग फ्रॉम द अक्टूबर अभी तक वी आर मोर और लेस रोज़ एक डेथ हो रहा है। वी हैव टू ऑल्सो सी दैट द नेचर ऑफ द वायरस एंड द विरिलिटी ऑफ द केसेस इट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग। आज का दिन पहले हमारा केसेस था वी वर हैविंग लॉट ऑफ असिम्टोमेटिक पॉजिटिव्स, बट आज का दिन तो हमारा सिम्टोमेटिक पॉजिटिव्स बढ़ रहा है। पहला हमारा सिम्टोमेटिक पॉजिटिव्स आउट ऑफ द टोटल केसेस वाज समथिंग नियरर टू 4 to 5% था। आज का दिन इट हैज़ रीच नियरली 20%। सो द पर्सन इज सिम्टोमेटिक इज ऑन 3 categories: mild, moderate and severe. And Arunachal Pradesh, in line with the government of India, has also allowed for home isolation for mild symptomatic cases. So कोई भी है mild symptomatic यहाँ है क्या है, basically the person is having fever, the person is having थोड़ा headache, but his SpO2 levels are normal and his breathing difficulty कुछ नहीं है। सो इनको वी आर अलोविंग हिम फॉर होम आइसोलेशंस। वो लोग हैं द इशू इज़ बेसिकली दे हैव टू मॉनिटर देयर प्रोग्रेस, हेल्थ प्रोग्रेस। हम भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी वी हैव स्टार्टेड टेली कंसल्टेशन एंड वी आर ऑल्सो हैविंग डिफरेंट फ्लाइंग स्क्वाड्स टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ सो दोज माइल्ड सिम्टोमेटिक पर्सनस हु आर अंडर द होम आइसोलेशन। वो लोग हैं इट इज़ इफ़ दे डू नॉट प्रॉपरली मॉनिटर, बिकॉज मैडम ये वायरस भी आप देखना है द पर्सन मूव्स वेरी फास्टली फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू सीवियर है। सो द पर्सन हैज़ टू मॉनिटर इस प्रोग्रेस। थोड़ा भी 2 दिन में कम नहीं हो रहा है, फीवर बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सो ऑटोमेटिकली ही हैज़ टू अप्रोच द कोविड केयर सेंटर। ही हैज़ टू गो टू इधर DCHC और ही हैज़ टू कम टू द DCH चिंपू। So self monitoring of the person is very important in this home isolation. हम इसलिए अफिडेविट भी बना कर दिया था। So this home isolation has to be monitored very closely by the person and also by his close family. हमारा केसेस भी आप देख लीजिए, थोड़ा केसेस है, आज का केसेस है the person who is mild symptomatic and was given home isolation, वो तो he has to come forward if his level SpO2 levels are going down or he is breathing difficulty हो रहा है। बट ऑन द लास्ट मिनट केसेस तो हॉस्पिटल पहुंच रहा है, इसलिए डॉक्टर्स को भी थोड़ा तकलीफ हो रहा है। एंड यस डेथ वाइज वी हैव टिल नाउ 28 डेथ्स हो गया। बट आप दूसरी साइड भी देखना है कितना लोग रिकवरी भी हो रहा है। हमारा वी हैव अ गुड रिकवरी परसेंटेज ऑफ नियरली सम 75+% हमारा रिकवरी है। एट द सेम टाइम अभी तक नियरली 200 to 250 पीपल हु आर ऑन द वर्ज ऑफ सिवियर केसेस था। थ्रू आवर डॉक्टर्स इन द चिंपू दे हैव सेव्ड द लाइव्स ऑफ दोज पीपल ऑल्सो। ठीक है, सो इट इज़ नॉट दैट हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ नॉट सीरियस अबाउट द केसेस। We are very much serious and our doctors they are working in Chimpu hospital for the last continuously for the people. Chimpu ने अकेला नहीं Pasighat also has been doing a very good work and बाकी जगह में भी हमारा ट्रेंड अभी as we have already said to the media also हमारा projections है going at the fatality rate of 0.19 or 0.20%। हमारा केसेस पहुँचेंगे डेथ फैटेलिटी रेट पहुँचेंगे अप्रॉक्सीमेटली 32-34 का आसपास इस महीने में पहुँचना है। बट ऑलरेडी वी आर रीचिंग 28। इस जगह में इफ़ और फैटेलिटी रेट इज़ इंक्रीजिंग मे बी इन द विंटर मंथ्स इट मे इंक्रीज मोर। सो हमारा प्रोजेक्शन है इफ़ और फैटेलिटी इंक्रीजेस इट मे रीच इवन 100-150 बाई December। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट यस दिस इज़ अ वायरस विच इज़ बीन डेडली फॉर इंडिया। पैन इंडिया में 1 लाख का ऊपर तो डेथ हो गया। बट हमारा अरुणाचल में वी हैव बीन गिविंग अ बेस्ट एंड हमारा DCHC एंड सभी DCH हॉस्पिटल्स है
सारे जगह में लाइक वी हैव इंश्योर्ड दैट लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह सारे हैं. बट ओनली थिंग थ्रू द मीडियम आई रिक्वेस्ट द पीपल ऑल्सो, कोई भी है लाइक आज का दिन हमने होम आइसोलेशन अलाउ किया था. सो हूएवर इज़ अ होम आइसोलेशन, थोड़ा सेल्फ मॉनिटरिंग अच्छा सा कर दीजिए. थोड़ा सा लाइक फीवर इज़ नॉट सबसाइडिंग इमीडिएटली इन 2-3 days. कॉफ ज़्यादा हो रहा है, हेडेक बढ़ रहा है, थोड़ा लाइक प्लीज़ गेट गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल, because the cases at the mild and moderate level, definitely we can address it. But when it goes to the critical level, we have been trying to save critical patients also, but thoda it is still the medicines and itna even the antiviral drugs, it is not working much at the severe level. So thoda sa through this medium I request the people of Arunachal Pradesh, कोई भी आपका माइल्ड सिम्टम्स है, वो बढ़ रहा है, आपका मॉडरेट पहुंचने वाला है, प्लीज़ अप्रोच द कोविड हॉस्पिटल्स एंड द ICU centers wherever it is available. We have established in all of Arunachal Pradesh 7 places where the ICUs are available and one dedicated hospital हमारे पास भी है. एंड सारी जगह में हमने कोविड के लिए we have given every districts 1 ambulances. So any referrals, please please avail the facilities of the COVID facilities. सारे जगह में we know that in the winter months अभी ऑक्सीजन का लेवल कम होने वाला है. So सारे जगह में we have ensured that about 1000+ beds are available with oxygens. वो भी हमने किया था. So we are hopeful we can reduce the fatality. अभी हमारा फोकस आज का दिन our health department focus is mainly to reduce the fatality and we are working towards it. So you have mentioned about the winter oxygen will be less. So how vulnerable will it be, the COVID-19 in winter? Ma'am, as say the government of India is also saying winter is coming. So winter will be harsh because normally in winter days the body's oxygen level comes down. The body's water blood which carries oxygen, the level comes down, so saturation point comes down. So at that point of time definitely anybody becomes moderate. Even for a moderate person it will be very tough for them, respiratory illness to jaldi aa jayenge. So the self monitoring through the home isolation, because we have taken a decision because of the opening up of the economy, हम तो ओपन करना ही पड़ेगा. एंड सिंस टू ensure that the cases we took the risk of opening because the economy was also not in a good shape, so we have opened up and we have also predicted the cases will also increase, वो भी बढ़ रहा है. एंड आज का दिन our prediction is also by this time it's 200-250 में चल रहा है. अगला महीने we may reach even 300-350. But only thing is in this whole processes we always believe is the self monitoring in the home isolation. And yes, doctors, our doctors are all on teleconsultation में हैं, वो भी monitor कर रहे हैं लोग को. But still I request the people to monitor themselves. अभी winter is coming and winter will be very deadly with respect to the oxygen, because ये पूरा basically it's a game of oxygen supply for the body. उसमें इतना कम हो रहा है उतना problem ज़्यादा हो सकता है. So let's hope we can cross this winter without much damage for our population here. So that's as per the majority of the sources, many people have voluntarily gone for the testing, but they didn't receive any calls from the department or from the hospital giving any precautions or any steps to be further taken, like be in home isolation or be come to the COVID care center. Nothing, they didn't get any calls. Ma'am, we have enforced, we have started and it is for the last 2 weeks it's going on. अभी हम देखेंगे कोई भी पॉजिटिव आ गया, सिम्टोमेटिक पॉजिटिव है, बिकॉज वी हैव बीन ऑल्सो वॉचिंग पेशेंट्स. आई एम ऑल्सो गेटिंग फीडबैक फ्रॉम मेनी पीपल. हमारा लोग आज का दिन वी आर थ्रू टेली कंसल्टेशन वी आर मॉनिटरिंग, especially with respect to the ICC, Itanagar Capital Region and Naharlagun. We have formed nearly 3 teams of flying squads also to monitor the patients, because it's definitely important to monitor the home isolation cases. And हम कर रहे हैं अभी भी we are doing to the home to the teleconsultations. But as I said ma'am,
डॉक्टर्स तो सुबह जाकर एक बार तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं, शाम को मिल सकते हैं, लाइक, बट इट इज़ अ पेशेंट एंड इज रिलेटिव्स हु हैव टू मॉनिटर देम, बिकॉज एट देर इज़ अ स्टेजेस इन विच दिस वायरस अफेक्ट्स द बॉडी. थोड़ा इसके, लाइक, इफ़ यू आस्क मी in this whole process, yes, in the home isolation we play an important role, some 30%. 70% of the role is played by the person who is affected. He has to monitor his cases and his family members have to monitor the cases. And कभी भी, cases increase, हमारा सारे जगह में, whenever a person is tested positive in Itanagar, we have a nodal officer here. His number is also shared with the patient there, and they have to monitor themselves. कभी भी, इनको एम्बुलेंस चाहिए, इनको, कोई भी चाहिए, वी आर रेडी टू प्रोवाइड एंड वी हैव बीन प्रोवाइडिंग. दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स, compared to even any other places, we have reduced our fatalities. But at the same time, I cannot deny that the fatalities will continue like this, because each person's body responses is different way for these viruses. And when a person moves from mild to severe without even going through the phase of moderate, वो भी cases हो रहा है. So that is one of the tough part for us also. So इतना public का, monitoring अच्छा है, उतना, especially self monitoring, in that much level we can reduce the fatalities. So WHO, as per the WHO records, that is more of the comorbidities there. But in Arunachal also we have seen that's among healthy people. What do you have to say? Madam, till now, out of the 28 deaths, nearer to 22 to 24 deaths are all comorbid cases. Basically, the major impact has been on the renal failures. Whoever are the CKDs, kidney diseases, इनका death ज़्यादा है. Second was with respect to the diabetic cases. The diabetic cases are all affected by this one. And hypertension थोड़ा cases था. But we have one or two cases, where without any comorbidities death has happened. Yes, the impact is has been very strong on those people, and it is not like our doctors have not tried. They have tried all the drugs that has been available now. As everybody knows, there is no any one drug which can cure anybody. आज का दिन, we have antiviral drugs, we have the life saving drugs, this tocilizumab is also there, and आज का, we are starting also plasma therapies. So these are all methodologies, which will help to save a life, but there is no any concrete protocol that this method will give this output or something, because for each one the virus, the results differently in each one's body. So but still we have been trying our best. We have been improving our health facilities also, and we are ensuring that people get the best of the facilities also now. So we are hoping that we can reduce the fatality rates as much as possible in the coming days. So talking about the testing kits, the rapid antigen test and the RT-PCR, as per some reports, the RT-PCR is kind of much more in सही निकल जाता है result, but in the rapid antigen test, how would you differentiate it? Ma'am, rapid antigen test is basically, we do it in आपका result, इसमें आ जाएंगे, 15-20 मिनट में आपका result आ जाएंगे. But this is having a sensitivity, specificity very low. So basically whoever is virus load है, basically this rapid antigen test is detecting the virus का protein and other things it is detecting. But the RNA part of virus, everything is detected to the RT-PCR. So RT-PCR is a gold standard, but our protocol here in Arunachal Pradesh, what we follow is, कोई भी आ गया, in हमारा flu clinics में, first we take their rapid antigen test. If they are positive, then it is 100% confirmed positive. But if they are negative, but if they have some symptoms, fever है, headache है, or they have cough, we immediately go for a RT-PCR for those people. And if the case people are mild symptomatic, and if they don't have any comorbid things, we recommend such cases for the home isolation. If the person is negative in rapid antigen,
then RT-PCR result में positive भी हो रहा है. So those positives, like depending on their symptoms, we we allow them home isolation or we take them in the hospital. So in this way, our testing protocol is followed here. It's not only RT-PCR, हमारा सारे districts में आज TrueNet mission भी हमने डाला है. So TrueNet missions also per day we are doing some 200-300 tests भी चल रहा है. So because हमारा अरुणाचल का considering the geographical conditions, we have decided to have a decentralized model of testing. इसलिए हमने TrueNet missions लगाए हैं सारे जगह में. Apart from that, rapid antigen kits which will help to easily identify, but it's not a complete 100% confirmatory test. But for persons who are detected positive in rapid antigen, yes, as per the ICMR protocol, he is positive. So we proceed on that. So don't you think the RT-PCR test kits should be minimized, because many people they hesitate to test because it's 2,500 tests. No, ma'am. We are very government of Arunachal Pradesh has taken a very clear call, and for those who become rapid antigen test negative, but they are symptomatic, free of cost rapid RT-PCR test is conducted on them. Okay, there is no charge. For rapid antigen, yes, 250 rupees is charged, but not for BPL and for the government employees of group C and D categories. So it was a call taken by the government that we should not charge any symptomatic rapid antigen negative for RT-PCR. So we are not charging for them.